Hi, good evening. What is happening? Happy New Year. Yeah, we are here in 2024. How excited are you for NEET already, huh? By the way, क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो 11th ग्रेड में है? मैंने टेलीग्राम पूछा था, पता चला कि बहुत लोग 11th ग्रेड के हैं। खैर एनीवे, आयोनिक इक्विलिब्रियम 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, मजेदार है। मेरी आवाज साफ आ रही है, राइट? यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी मी क्लियरली, वो सब चिल है। अगर आप पहले मेरे सेशन देख चुके हैं, देन यू नो हाउ व्हाट द ड्रिल इज, राइट? हम लोग एनसीईआरटी में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके थोड़ी थियरी देखते हैं, फिर सवाल करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सेशन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहां से? टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट मोर थियरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, मैंने पूरा डिटेल में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। वो ओके, दैट्स वियर्ड, हाँ? I thought I turned all notifications off and भाई साहब starts ringing. खैर, are you able to see me and hear me clearly? Let me just tell the person who called कि भाई अभी मैं सेशन में हूँ। One moment, हाँ? All right. What's happening? आवाज आ रही है? Okay, भाग्य, तीर्थराज, पंपा, देवांशी, AI, artificial intelligence. What's up? What's up? हाँ हाँ, I did not know that laptop ring करेगा. Laptop भी ring किया भाई साहब. Oh, it's hilarious. खैर, anyway. What is up? Happy New Year! So, क्या करने वाले हम लोग? Ionic equilibrium. This is where we are at. 2nd Jan. Shall we start? Let us start. What are we going to do? We're going to look at this. Okay, हम लोगों ने last time देखा था chemical equilibrium कहाँ तक था, which was somewhere till here. We'll look at what is an NCERT, what's important according to me, and I think जिसके chances हैं पूछने के लिए जेई, I'm sorry, थर्ड जेई, मैंने जेई का सुबह सेशन लिया, नीट पूछ सकता है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. This is interesting. By the way, I did not realize until now कि Faraday भाई साहब, same Faraday, you know, not that song, but Michael Faraday, he classified this stuff into, you know, things that can conduct electricity and things that can't, you know, conductivity, conduct insulators and conductors, etc., etc. Anyway, electrolytes and, well, yeah, non-electrolytes, not conductors, insulators. Sorry, we're talking about specific solutions के बारे में, right? So can you believe that is the same Faraday? It's the physics वाला Faraday. Well, I was reading this, I was like, what? Man, even I should read the NCERT. मैं आप लोगों को बोलता रहा NCERT पढ़ो, मुझे खुद भी थोड़ी और डिटेल में पढ़नी चाहिए, एक एक शब्द मुझे याद होना चाहिए. That's going to take some time. Okay, anyway, yeah, that was something interesting. Anyway, so there are some theories, right? कुछ theories हैं, अजीब यहाँ पे spelling mistake थी, which have kind of just, you know, acids are substances that dissociate in water to give hydrogen ions. इस point of view से Arrhenius concept है. अगर H plus ion accept कर रहे हैं, तब उसको जो है base बोलते हैं, right? That's Arrhenius का concept. Bronsted-Lowry, which is what most of conjugate acid-base theory is based on, has to do with only H plus. Sorry, Arrhenius had to do with H plus and OH minus. ठीक है? But our focus almost in its entirety is going to be on this. In fact, even the whole of जो organic chemistry है, उसका भी पूरा जो है basis is just on this one thing right over here. All right, good evening. और कौन कौन है? पीयूष, शालिनी, अविलाश, अरीना. Wow, नए लोग. Electrochemistry वाला Faraday. Yeah, it's the same Faraday exactly, Piyush. And also physics वाला Faraday. You know, the chap in physics who did so much electrostats and all of that. Khair, anyway. Mrinal ji will tell you more about it. Ask you what did Faraday do? If you ask him, he's probably going to be like, what are you talking about, bro? खैर, इस चीज पे सवाल आ सकते हैं. देखो, this is very interesting. And let's take a second to appreciate this. पानी H2O का conjugate acid H3O plus and conjugate base OH minus. ये straightforward है. But look at this. Ammonia का conjugate acid NH4 plus है और conjugate base NH2 minus है. This is a pretty strong base. Yeah, ये काफी strong base है. And this is a weak acid. Well, actually, I'm not sure about this. What I'm sure about it is this one. वो आप देख लेना. In this case, दोनों जो है strong और weak है, right? This is very strong and this is also really strong. ठीक है. Why? Because this case ये दोनों तरीके से weak है. Yeah, it's a weak, very weak base and a very weak acid. Okay, इसलिए दोनों तरफ, which is इसका acid और उसका base दोनों strong है. But generally, ammonia is supposed to be a base, right? मतलब उसका acid जो है ये होगा और उसका conjugate base will be this. So all you've got to do is remove an H plus and add an H plus. Yeah, looks like I'm teaching this. ये तो नहीं पढ़ा था. हम लोग revise करें जल्दी. Let's go with other stuff. खैर, Lewis concept of acid bases. This is also very important for organic chemistry. So bonding शुरू करने से पहले you must know this idea. I'm sorry. Organic chemistry शुरू करने से पहले you must know what is the Lewis acid, Lewis base, regular acid base का idea, and chemical bonding के basics, electronegativity and all that, and then you're sorted with organic. Organic is really easy once you do these things. खैर,
The next idea that's important is what is ionic product of water. How do you really, इसी चीज को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के आइडियाज को ही एक्सपैंड करके यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है. पीएच स्केल क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये सब चीजें डन इन 10th ग्रेड, राइट. आई थिंक 10th में आप इसको कर चुके हैं. अगर आईसीएसई में तो डेफिनेटली कर चुके हैं, अगर सीबीएसई में तो मे बी नॉट. एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो बैलेंस की बात होती है ना, लोग बोलते हैं कि H प्लस और OH माइनस का बैलेंस अगर दोनों इक्वल है देन द सब्सटेंस इज न्यूट्रल. ओके, दैट्स सो फार सो गुड. बट इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है, पलरा भारी हो रहा है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ पीपल टीच लाइक, ओ H प्लस बढ़ गया, OH माइनस कम हो गया. इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लिनियर. इट्स नॉट लाइक अ वेइंग स्केल. दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है. दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर. HCO plus and OH minus product is what is constant, which is 10 to minus 14. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, say if I go from 300 to say 400 Kelvin or something like that, और इसकी वैल्यू हो गई 10 to minus 12, इस केस में नया pH न्यूट्रल यही होगा, ठीक है. न्यूट्रल pH बदल सकता है अगर टेम्परेचर बदला तो. एंड व्हाई डू आई नो कि K की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी. ये सब चीजें शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है. एनीवे, do solve all these solved examples NCERT में, that's really important. Hey, Hare Krishna Saloni, how are you doing? Good evening, Amol. Pranam. Teejraj, PH class 9 में था West Bengal board में. Lovely man. Wow, West Bengal board, huh? OP. Happy New Year, medical girl. All right. So, look at this. यहाँ पे K की वैल्यूज हुई है. भाई कितनी चीजें खुली हैं. Wow, other stuff that's coming. Okay, Sudhanshu. All right. Lot of stuff was open from my last session. Telegram and WhatsApp, that's what's being spammed. Hold on, I thought I closed WhatsApp, guys. Oh my God. ये भाई साहब बंद ही नहीं हो रहे हैं, हो गए बंद, ठीक है. एनीवे, लुक एट दिस. यहाँ पे Ka की वैल्यूज दी हुई है. एंड अगेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नीड टू नो व्हाट इज pKa माइनस लॉग ऑफ Ka. इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. कभी मेरे से कल ही एक स्टूडेंट डिस्कॉर्ड में पूछ रहा था कि क्या NaOH के साथ रिएक्ट करेगा एनिलीन. आई बी लाइक, वेल, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन विल हैपन, और एनी रिएक्शन विल हैपन अगर वीकर बेस और वीकर एसिड फॉर्म हो रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट यू स्टार्ट ऑफ विद. इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि NaOH का वीकर बेस होगा, H2O is a weaker acid. Yeah, I'm just talking about this, like NaOH plus aniline. Aniline क्या है? Is this guy right here, right? This reaction, will it happen or not? Okay, so H2O is the conjugate acid of OH minus, ठीक है. But this guy, ये तो नहीं बनने वाला है भाई. This is not even like NH minus. That's so not going to happen, right? Because इसमें से H plus यहाँ पे गया, that's not going to happen because इसका pK value is like some 31, okay, which is like a very weak. It's not going to behave like an acid. NH2 aniline is not going to behave like an acid. It could behave like a base for sure. It could accept H plus. It's not doing that. Okay, so this reaction is not going to happen. If this sounds a little random to you, यार ये आशीष तो बोल रहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री का सडनली ऑर्गेनिक की बात कर रहा है. All of this is what helps you do everything in organic. The concept of pKa is what the whole of organic chemistry is based on. I know NCERT में ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, but if you're ever stuck in something की reaction होगा कि नहीं होगा, you compare pK values and figure out कि अच्छा अगर weaker acid या weaker base बन रहा है या नहीं बन रहा है, that's when you figure things out. Anyway, जो ionization constant है of an acid and a base, उसका तो आप लोग जानते ही हैं, right? You do this whole idea of forming this equation, yeah? That K value is going to be equal to alpha square C alpha square by C into 1 minus alpha by C square alpha square by C into 1 minus alpha. ये cancel कर दो तो बन जाएगा C alpha square by 1 minus alpha. This for a monobasic acid or a base, right? And after this, अगर alpha बहुत छोटा है, then you say that okay, it's almost going to be equal to this, almost going to be equal to 1, etc. And you get that nice expression where K is equal to C alpha square and alpha C alpha is equal to under root of K by जो भी है, जो बहुत चीजें हैं. खैर, इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो. ये सब सॉल्व क्वेश्चंस कर लेना जरूरी है. सेम चीज आप बेस के लिए भी कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट बेस यू आर फाइंडिंग आउट OH minus ion concentration and not H plus ion concentrations. यही मेन फर्क है बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड. एंड अगेन pKb की वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं. प्लीज हैव सम टाइम फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट. इमशान जी, हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे उसमें करेंगे. इन दिस NCERT वाले पार्ट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग स्टफ दैट आई फील यू शुड स्पेंड टाइम ऑन, ठीक है? एज you know you're going to be giving NEET, आप प्लीज को पढ़ के आइए. अगर आपको थ्योरी में समझना है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, इमशान जी डिस्क्रिप्शन में है, थ्योरी आराम से करना, ठीक है? अभी हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. लेट मी क्विकली लुक एट ओके, एवरीवन से हैप्पी न्यू ईयर प्रकाश एंड सुभाश्री एंड एवरीबॉडी एल्स. अनमोल सेज जब 10th 12th में सब पढ़ ही लेते हैं तो फिर क्यों आते हैं हम लोग पढ़ने के लिए? बहुत अच्छी बात है अनमोल.
That's a very good question. I think that's a question that you should answer yourself, right? अगर आप सब कुछ पढ़ लेते तो फिर क्यों ही और पढ़ना पड़ता है? I think the whole goal of these competitive exams is key to be able to do things very quickly, right? You have 45 questions in chemistry and you have 1 hour to do it. Not even 1 hour, you have 45 minutes to do it. So 1 minute, one question is what you got to do. It's pretty crazy. Pretty crazy, right? You got to do them quickly. That's the whole point. And बहुत vast syllabus है. So you got to get used to doing all this. अगर आप खुद पढ़ लेते तो best है. Self study is the best way of studying things. But sometimes some people need mentors. I guess that's why you're here. Anyway, for a conjugate acid base pair, Ka और Kb के बीच में relationship क्या है? It is this nice little thing right over here. Now please don't mug this. This only and only works if you have a conjugate acid base pair. This is not for any random pK and pKb. ठीक है? It is only if you have a conjugate acid base pair. There is a little bit of theory about di and polybasic acids and bases. You can figure this out. It's no big deal. एक के बाद ये बस ये जरूरी बात है कि Ka1 is always going to be greater than Ka2 is always going to be much greater than Ka3. Look at this. 4, 5 and 7. A3 minus 8 and minus 13. Look at that. And phosphoric acid. Look at that. So it keeps changing, right? It keeps reducing, reducing, reducing. This part is very interesting on this side of the screen. Right? As you go down the group, electronegativity कम हो जाती है and इसलिए H plus ion ज़्यादा आसानी से निकल जाता है. That's why this is a much stronger acid as compared to this. And ये same चीज P block में भी है. तो you'll see that in NCERT सब चीज linked है. वहां पे आपको pK A की वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे pK 3 है, यहाँ पे pK negative 30 है, ऐसा कुछ. I don't remember the exact number. For HCl it is 10 power negative 7. मतलब कि Ka is 10 power 7. Okay. It's very, very, very acidic. What does this Ka 10 power 7 mean? मतलब if Ka is greater than 10 power 3, मतलब reaction goes to completion. ये हमने last time किया था. Okay. और अगर आपने मेरा P block वाला session देखा over the weekend, then you will see कि हमने इसकी भी बात की थी over there. So look, NCERT is talking about the same thing from different points of view. Okay. There is some ideas about which is strong, which is weak based on electronegativity ideas as well. Second last idea of this topic is common ion effect. Literally the most important thing from the idea of what is KSP, which will come next, and also salt analysis. Okay, common ion effect is just says कि अगर एक ion already exists कर रहा है और मैं उसमें same ion और डालूं तो it will it will suppress the formation of that same substance. So for example, यहाँ पे एक बहुत simple सा example दिया हुआ है. See, oh, that did not get highlighted, is it? We'll talk about that. We'll talk about that common ion effect when we do some sessions. Yeah, okay. Like look at this over here. Acid ion already है, acetic acid भी है. So it will result in decreasing the concentration of the hydrogen ions. Also, this whole substance, if I have say CH3COO minus, I add that to CH3COOH. Specifically this, right? This common ion effect also leads to a buffer. Okay, in this case, it forms a buffer. It's beautiful. What is a buffer? Something that reduces the change. It does not let it does not affect any change in pH. चाहे मैं थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस ऐड करूं या डाइल्यूट करूं, कुछ भी करूं, ये तीन चीजें हैं, ठीक है? या तो मैं थोड़ा सा एसिड ऐड करूं या फिर थोड़ा सा बेस ऐड करूं या फिर डाइल्यूट करूं. In all of these cases it will not change. How do you know this? From the HH equation, you know that pH is pKa plus log of salt by acid. यही सेम चीज आप कर सकते हैं. मैं बोल कुछ और रहा था, लिख कुछ और रहा था. सेम चीज आप कर सकते हैं फॉर अ बेस, बट फॉर अ बेस मेक श्योर यू राइट POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय बेस. नाउ व्हाट इज दिस सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस? सॉल्ट वही है A माइनस या फिर CH3COO माइनस, और एसिड क्या है? एसिड इज HA और CH3COOH. ठीक है, ऑल दिस यू कैन फिगर आउट, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन मग दिस फॉर्मूले इफ यू वांट. Henderson-Hasselbalch equation इसको बोलते हैं, but you don't need this formula per se. Yeah, you can do it without the formula. Look at this. NCERT में आधा पेज लिखा है buffer solution के ऊपर. This and this, but it's a little bit more than that. Another thing that's pretty important is this hydrolysis का idea. मतलब कि same चीज में, like CH3COO minus है और CH3COH था. Now in this, if I neutralize this guy with sufficient NaOH, like exactly 1:1 ratio, then what I have is just this salt. This इसका होता है hydrolysis. Okay, this guy will react with water. Can you see this? Yeah, you can see this. Okay, and it gives you वापस acid and will give you what? अरे H plus क्या? OH minus. आई तो ये हो जाएगा basic. This is a basic solution. This is hydrolysis. और आप इसी first principle से आप figure out कर सकते हो उसका formula क्या है. You don't have to worry about this scary little formula over here. Okay, यहाँ पे है weak acid और weak base का दोनों है.
Yeah, if you have a weak acid and weak base, then you get this formula for hydrolysis, right? For other things, you have different formulae. But I'll show you questions where you don't need the formulae so much to solve these questions. Last idea is solubility का equilibria. हाँ, और बहुत लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लोगों और कुछ देख रहे हैं. इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मोहम्मद हजीर बोल रहे हैं. ओके, बेस्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हर्ष, दैट वुड बी जुमडाल और एबिंग, वन ऑफ दीज टू. कॉमन फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉमन फैक्टर करेंगे. बोर्ड और नीट में बहुत अंतर है, बिल्कुल शालिनी. बोर्ड और नीट में बहुत अंतर ये है, मेन अंतर ये है कि बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखनी पड़ती है, नीट में आपको बहुत जल्दी चीजें फिगर आउट करनी, यू हैव टू रीड थिंग्स सो क्विकली. बहुत जल्दी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी और एनालाइज करके सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा. Very intense. NEET is very intense. NEET और even Karnataka CET and Maharashtra CET, इन सब एग्जाम्स में बहुत जल्दी जल्दी चीजें फिगर आउट करनी पड़ती है. आपको इक्वेशन मालूम नहीं चाहिए, फॉर्मूला डालो, गेट द स्टफ एंड गो ऑन. असर्शन रीजन है तो दिमाग में जितना करना है, सोचना है, सोच लो, मार्केट मूव ऑन. इट्स वेरी इंटेंस, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स. खैर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आइडिया, या दैट इज व्हाट सॉल्ट एनालिसिस यूजेस एंटायरली. देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड में जो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब केएसपी बहुत कम है तो वो वहां पे इट विल प्रेसिपिटेट आउट. फोर्थ ग्रुप में केएसपी बहुत हाई है, ये भी हमने वीकेंड में किया था, राइट? कि निकेल जो फोर्थ ग्रुप में है, कोबाल्ट जो फोर्थ ग्रुप में है, वो हो जाता है प्रेसिपिटेट, बट वो नहीं होता है प्रेसिपिटेट. बट लेड, आर्सेनिक और कॉपर सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन में भी. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, अगर मैं H2S और HCl ऐड करूं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, राइट? बट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी वो प्रेसिपिटेट हो जाता है. दैट इज व्हाट, दिस इज द आइडिया. यही आइडिया हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है? एंड देन देयर इज सम आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, वो सब चीजें हैं. डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट मग दिस, ये कोई मग करने की जरूरत नहीं. आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए, यू विल बी एबल टू फिगर दिस आउट. ये सब चीजें हैं बट कोई मग करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं. और बहुत स्कैरी स्कैरी टेबल्स दिए हैं. खैर, yeah, I've already spoken about this common and effect on solubility of ionic salts. I spoke about this in quite some detail right about now. चलें शुरू करें. अंताक्षरी लेखक हरि का नाम. Should we start questions? JE2. Happy New Year, Abhinandan. Yeah. All right. Should we start questions? Name the book. Harsh. अभी तो नाम लिया मैंने. Here, I will type it out for you. Yeah, but these are little heavy for NEET. ठीक है, but if you want you could try it out. I think the second book is better for NEET as compared to the first one, but they are both brilliant books. Like अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, read these books, you will definitely understand it. Practice wise, again, do the first part of the questions. What challenge or marathon questions get to be a bit much in both of these books. ठीक है, चलो. Any doubts, guys? Somebody wanted me to spend more time on one particular topic. We'll do that in the questions, right? Ask me anything you want in the questions. The NCERT bit was more to tell you कि यार यहाँ से तुम लोग देख लेना, ये चीज जरूरी है, प्लीज, क्योंकि कोई NCERT पढ़ता ही नहीं है. अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे यू विल एस नीट, कोई डाउट ही नहीं है. पहला सवाल देखते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्योर वाटर अमंग्स द फॉलोइंग इज. थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया पहला सवाल, ट्राई करो, ज्यादा सिंपल हो गया. लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट. कमेंटेटर, या दैट्स माय ड्रीम जॉब. अजहर जी, सॉरी, उजैर जी. Yeah, that's good, Titra. That's good. Piyush says D. Okay. Yeah, easy, right? ज़्यादा आसान हो गया पहला वाला सवाल. ठीक है, it's okay, it's okay. Starting off. Yeah. Piyush, AI, Shalini, Tisraj, Gopinath, भाई साहब, all are saying, yeah, this is easy. It's very easy. Just to make sure सब लोग कोई सोया तो नहीं है. देवांशी, पंपा, भाग्या, excellent work. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Why are all three there? Yeah, this is just this. No, this is just the ionization of water. Self-ionization of water. यही है, ठीक है. P K W is equal to 14, which is equal to P, anyway, pH plus POH. In this case, both of them are 7 and 7. Neutral solution, etc., etc. चलो आगे बढ़ा जाए. The compound, that too easy. Wait, AI is saying wait. No, you're right, bro. You're right. The compound that does not act as a Lewis acid is, does not act as a Lewis acid. If it doesn't act as a Lewis acid, it must act as a Lewis base, right? ये वाला भी सिंपल है. ग्रेट. पीयूष, शालिनी, देवांशी. If it's not a Lewis acid, must be a Lewis base, and Lewis base is lone pair of electrons, and nitrogen has a lone pair. Hence, that must be the answer. Yeah. पीयूष, शालिनी, देवांशी, हर्ष, तीतराज, गोपीनाथ, पंपा, सब लोग बोलते हैं बहुत सिंपल हो गया सवाल. Yes, absolutely. Good job, good job.
जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो आएंगे मजेदार सवाल. नेक्स्ट वन. स्पीशीज दैट एक्ट बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड अ ब्रॉन्स्टेड बेस इज. दोनों, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस. जरा सोच के बताइए, ध्यान से सोचिएगा. डू यू थिंक दिस वन इज डू बाय? ये वाला भी हो जाएगा, ये वाली कोई बड़ी बात नहीं है. ट्राई करिए. Whoa, what did I do? I did something weird. Did I do something weird? Now I think we're good. Okay, what do you think? Bronsted के ऊपर एक ये होना चाहिए, right? Oh, what did I do? Ah, I showed you the answer. Just trying to, yeah. Bronsted acid and a Bronsted base. Was it that or इसके ऊपर ये भी था? I don't remember. Just the पेट कटा O. Okay. A lot of you are saying A. Is that the right answer? Looks like it is. Shalini, Devanshi, Piyush, Pampa, Gopinath, Bhagya, Harsh, Titraj, all saying A. Yeah, absolutely. It can act as a Bronsted acid and a base if it has H plus to give away and to and accept, right? Give away and accept. Yeah, दोनों कर सकता है, and that's true. So this can become SO4 2 minus, and it can become H2SO4, H3, H2SO4. So this works. Yeah, this guy here is CO3 2 minus, so it can accept, it can become HCO3 minus, but it can't give away. It doesn't have anything to give away, so can't give. NH3 minus, NH3 is interesting. Okay, could become NH4 plus and NH2 minus, but it's a little complicated. I think this part is a little complicated. OH minus can become O2 minus and it can become H2O. Hey, तो ये सब नहीं हो सकते. A, C और D तीनों नहीं होंगे. Oh, नहीं, yeah, it can be A, C and D. I don't know. And it will be very easy. I love that, Teejraj. ये तो तीनों हो सकते हैं. But yeah, most likely answer is HSO4 minus. बाकी जो हैं थोड़े अतरंगी हैं, तो we'll ditch them. Okay. चलिए, let's get started. तीसरा जी बोले बहुत आसान है, तो let's see कितना आसान है. Using Gibbs energy change, delta G naught equal to plus 63.3 kilojoule for the following reaction. Ag2CO3 gives 2Ag plus CO32 minus. The KSP of Ag2CO3 in water at 25 degrees Celsius. Okay. KSP निकालना है, सब कुछ दिया हुआ. एक्चुअली ये भी डुएबल है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स है बस. ट्राई करिए इसको. आई थिंक दिस इज आल्सो डुएबल. इट्स नॉट दैट क्रेजी और हार्ड और एनीथिंग. थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा. टेक योर टाइम, डू दिस, प्लीज ट्राई करिए. See, KSP is a special case of equilibrium, right? K is equilibrium. KSP also is equilibrium. What does that mean? That means that here delta G will be equal to 0. And you also know that delta G equal to delta G naught plus RT ln K. You know these equations. Now use is first principle se kariye. Yes, exactly. Minus RT ln K. Piyush read my mind. Good job, Piyush. So delta G is equal to 0. Delta G naught will be equal to negative RT ln K. बढ़िया. अब उसको आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बिकॉज एंटी लॉग लेने से ही यू कैन फिगर द स्टफ आउट. ट्राई इट आउट. ट्राई इट आउट. This becomes very interesting actually. Try करिए इसको. Try करिए. You're right, Piyush. Right track. Please give it a shot. Okay, I can write down the expressions for you. What Piyush said exactly यहाँ पे लिख देते हैं. Delta G naught is minus RT ln KSP. क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम की उस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जहां पे Ag plus और CO3 2 minus ions are in equilibrium with AgCO3, Ag2CO3, the salt. ठीक है, तो let's try it out. Titra says B. Okay. All right, that was quick, bro. Titra, good job. What do the rest of you think? So the first thing you got to do is सब जगह anti, you got to take anti-log, right? KSP will be equal to E power minus delta G naught by RT. ये करना पड़ेगा, है ना? ये करना पड़ेगा. और in the end you can leave this also. ये करना भी जरूरी है. End में उल्टा भी कर सकते हो. You can do this in the end, right? You can write it as delta G naught equal to 2.303 minus यहाँ पे रख देते हैं RT log K, है ना? फिर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा. KSP निकालना होगा. सही बोला. लेट्स कंटिन्यू. ओके,
कुछ लोगों ने जल्दी में कर दी गड़बड़ी। पीयूष, शुभश्री, एआई, गोपीनाथ, देवांशी आर ऑल सेइंग ए, बट आपका एक दोस्त तीर्थराज डटा हुआ है, ही इज सेइंग बी। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड देयर गाइस? एआई, आर यू श्योर ए इज द आंसर? मैंने यहाँ पे एक छोटी चीज लिखी है, डिड यू डू दिस और डिड यू डू समथिंग एल्स? मैंने ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है। ऊपर वाला लॉग है, नीचे वाला ln है। टेल मी, आर यू श्योर अबाउट दिस? व्हेन यू डू इट दिस वे, लेट्स, जो जिस तरीके से मैंने किया, लेट मी कंटिन्यू, यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। आई एम गोना कंटिन्यू इन दिस मैनर, ओके? आई विल सब्स्टिट्यूट डेल्टा जी एस 63,300 बिकॉज 63.3 किलो जूल प्लस है, प्लस चार्ज एज इट इज रहने दे वहां पे। ये 8.314 और 298 है। Now, because I don't like these numbers, I'll just write it as 25/3 and I'll write this as 300 ताकि उन दोनों का multiplication हो जाए 2500. So that is what I've done over here. Now, once I substitute this, it becomes approximately e power 25, negative 25. And you'll be like, bro, this obviously can't be a, because 10 power e power minus 25 is not 10 power minus 26, right? That's not happening. So the answer must be this and not this and not this. That's my guessing way of doing it. If you want to do it in the other way, which is delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K, अगर इस तरीके से करना चाहते हो तब भी वो भी कर सकते हो. So delta G naught is 63,300 divided by 2.303 into same चीज 2500 कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 divided by 2.3, अप्रोक्सीमेटली ले लो, ये क्या होगा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी 10 से थोड़ा ज्यादा, लाइक लिटिल बिट ग्रेटर देन 10, लेट्स से 11 अप्रोक्सीमेटली 11 हो गया, है ना? सो नाउ यू गेट log k equal to minus 11. So k is approximately will be 10 power minus 11. That's the answer right here, right? समझ गए? बहुत कॉन्फिडेंटली सब लोग बोल रहे थे, इसलिए आई सॉल्व्ड इट अगेन पूरा आप लोग के लिए। दो तरीके से कर सकते हो, या तो e वाले तरीके से करोगे, then you be like e power minus 25, what do I do with that? Or this becomes same as 10 power minus 25 divided by 2.303. It's the same as that. मेडिको जी आप यहाँ पे थे, आप तो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, अब फिर से अब हेलो बोल रहे हैं। 10 power minus 12, yeah, this is the answer. ठीक है, cool, yeah, all right, good, you've changed your answer. Pampa, Shalini, AI, Devanshi, all right, good job, ठीक है. All right, next question, fun question, right? Yeah, you guys saying thanks for what did I say? Oh, anyway, let's move on. Find out the solubility of NiOH whole twice in 0.1 molar NaOH, given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 power minus 15. Now, this is a good way to precipitate nickel. Yeah. Oh, it's all right. Medical. That's absolutely fine. Try this out. By the way, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, this is there, NCERT में है. आप सवाल देखिए. I'll show you that this is in NCERT. Is D, is it? I don't know how the answer is. ठीक है, let's take it as D. Similar questions are there in NCERT, right? And I think I've solved some of these theory questions with you guys as well. Hold on. Let me look for this. 78 questions, and thoda 73 questions, a little bit scary, but I'm just looking at this thing right now. This guy right here, maximum concentration, equimolar, blah, 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 blah. Yeah, ऐसे सवाल इसमें है. See, I'm just going to quickly switch to NCERT. You see this one and this one are similar. Actually, the one that I've given you on NEET is much easier than NCERT. You'll be like, NCERT कोई भी कर लेगा. You do these questions, you'll be sorted for NEET. The question I've given to you right now on NEET is a lot easier than these two questions that I've just shown to you. ठीक है? Here, D, सब लोग sure? Okay, cool, great. So, Tisraj, Medico, Devanshi, Gopinath, Pampa, Piyush, AI, and Saloni are all saying D. All right, let's see. The main thing is it should reduce. It has to reduce. Reduce मतलब कि it must be something. But because मैंने OH minus ions डाले because of common ion effect, right? It must reduce. Just a theoretical idea. It should reduce, right? So if I look at it like this, अगर मैंने S mole डाला of NiOH whole twice, then it will form S moles of Ni2 plus and it will form 2S moles of OH minus, and extra कहाँ से आया? ये 0.1 that comes from here. Now I am assuming S is very small. 0.1 is much greater than S. So this is all approximately equal to 0.1 itself. Yeah, I can do that.
and then I can say कि S into 0.1 should be KSP. अब इतना करने के बाद what do I do here? I think it's very doable then. 2 into 10 power minus 14, KSP क्या था? 15 था. अच्छा, कुछ तो गड़बड़ी हुई. Wait, what did I write? 10 power minus 14. Hold on. How did you guys get this? It should be 10 power minus. Acha, I think there was a typo somewhere, right? This should be 10 power minus 14, not 10 power minus 15. Because for you to get this value should be 10 power minus 14. I think there was a typo in the question, right? It should be 10 power minus 14, not 15. Hold on. Let me fix that quickly. Right? There was a typo in the question, right? That's the only way you can explain this. Because otherwise, how do you get 10 power minus 13? Hold on. I'm fixing that in the question very, very quickly. Agree or disagree? सवाल में typo था. It cannot be 14. It must be 15. I don't know how you guys, all of you got the right answer, even with that. But good job, I guess. Good job. Good job. Good job. Good job. All right. ठीक है. Cool. Let's move on to the next question then. All here with me? सब लोग ठीक है? Yeah. एक और सवाल. pH of a saturated solution of CaOH whole twice is 9. The solubility product KSP of CaOH whole twice is what? Yeah, 2 into 10 power minus 14 by 0.1 is 10 power minus 13. Yeah, you're right. Yeah, you're right. Yeah, absolutely. pH of saturated solution of CaOH whole twice is 9. The solubility product KSP of CaOH whole twice is what? Try करो. बार 2020 और 2019 दोनों बार KSP के सवाल आए. That's an interesting statistic to note. Just to note. इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी आएंगे. Just a statistic to note. Control Shift plus, not Control plus. It should be Control plus. Let me copy that. Fix this. What do you think about this one? Look, the way of solving this is very similar to the last one. बहुत similar है. In fact, 2019 and 2021 looks like बहुत ही similar चीजें. Whole square होगा. Harsh. Okay? Harsh is saying whole square होगा. Okay? Okay. Yeah, previous one is 2 point. It should be whole square. Yeah, absolutely. Yeah, I was wondering that could not be right. Not look right. Oops. Yeah, 2s plus 1 whole square होगा. You guys are absolutely right. It's not. Yeah, I was wondering how you guys got it right. और जब हम बोल रहे थे तो मैं किसी ने कुछ बोला भी नहीं. Yeah, it should be whole square. 2s plus 1 whole square, but 2s doesn't matter. So hence 0.1 whole square divide करो 2 into 10 power minus 13. Correct. Perfect. इस वाला का try करो. What do you think about this one? Thank you for pointing that out. I'll fix that in the stuff that I wrote. It should be a square. Square that I missed out was right here. I'm going to fix that. Hold on. Draw. Yes. Okay. Yes. In the notes, it'll be fixed. But thank you for that pointing that out. ये वाला try करो. Okay. Hercules, absolutely right. Thank you for pointing it out. Hercules, thank you for that. Yeah, we've fixed that. Thank you. Devanshi, Bhagya, AI, Vaishnavi, Teethraj, and Gopinath are all saying D. लगता है D होगा फिर सब लोग बोल रहे हैं तो चलो उसको चेक करते हैं. अगर CaOH का pH is 9, what does that mean? देखते हैं. That has something to do with it. But basic, चलो let's do things from step by step. पहली चीज you'll write CaOH whole twice is S and 2S, right? ठीक है. Okay. Now this pH equal to 9 means कि OH minus concentration is 10 power minus 5, which is 2S. Do you agree with this? Is this okay? ये वाला part ठीक है. Great. You've all figured it out. Now, this is fixed. Okay. This is fixed. So, 2s whole square times s should be equal to KSP from this same, what do you call it, stoichiometry. So, that would be 10 power minus 5 whole square into 10 power minus 5 by 2. Right? मैं ऐसे ही ले रहा हूँ. I'm not changing anything. This is 10 power minus 5. This is 10 power minus 5 by 2. So, what is it going to be? It's going to be 10 power minus 15 by 2. Which is the same as this, 0.5 and 10 power minus 15. Excellent. Good job. Hercules.
AI, Medico, Shalini, Piyush, Gopinath, Devanshi, Teetraj, Vaishnavi, AI again, Bhagya, Pampa, Devanshi. Good job, good job. And Hercules, thank you for telling me about the past one. Yeah, we fixed that one. All right, which will make a basic buffer. जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हो. Get through these and then we have three very interesting questions. Yeah, in which maybe you can get it with a formula, you can do it without a formula. इनमें से कौन सा बनाएगा basic buffer? Now, what is a buffer anyway? Buffer is something that resists change in pH. Why will something resist change in pH? अगर एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर वहां पे है, ठीक है, एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस और एक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, वो दोनों सिस्टम में है, दैट विल फॉर्म अ बफर. बट यहां पे बेसिक बफर का मतलब क्या हो गया? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. नाउ वीक बेस तो दिख रहा है हमें दो जगह, दिख रहा है वीक बेस, मतलब ये दोनों नहीं होंगे. बट सॉल्ट कहां है? सॉल्ट तो हमको नहीं दिख रहा है, सॉल्ट तो नहीं दिख रहा है. हाउ डू वी डू दिस वन? One, 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 one. Okay, lovely. All right, cool. You all figured it out. Lovely. Shalini, Hercules, AI, Gopinath, Teetraj, Pankaj, welcome. Medico, Pampa, Piyush, Devanshi and Bhagya all saying it. मतलब you figured out. कैसे? Salt कहाँ से बनेगा? न्यूट्रलाइज करके. अगर मेरे पास एक्सेस वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है तभी होगा. ओके, तो ये है एक्सेस. ओके, 100 ml एक्सेस, राइट? Exactly 100 ml मुझे मेरे पास salt है, so I have not 100 ml. Let's say 0.1 millimole of, say, what did you call this? NH4Cl of NH4Cl is there, and 0.1 millimole, 0.1 हो गया ना? हाँ, 0.1 millimole of NH4OH will be there. Specifically ये होगा इसका buffer. इस केस में you only have a salt, and that salt is not it's this salt, the same NH4Cl salt, right? इसका pH is going to be greater than 7. वो जो formula, you know how this works, right? 7 plus blah, 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 जो भी है. It's the end point of the titration. What titration? I am titrating, say ये है यहाँ पे NH4OH and here I've got strong acid. मतलब ये था कुछ ऐसा. Let's say it's almost kind of constant like this. It falls like crazy, that goes this way. So this is the buffer part. This is the equivalence point. ये सब मैंने theory की है, अगर आप चाहो तो जेई चैनल पे भी देख सकते हो. And this is greater than 7 or even in the thing down below. Anyway, good job everybody on figuring it out. Hey Kirito, how are you doing? Vaishnavi, Bhagya, Devanshi, everybody else up above. Good job. अगला सवाल. This one is interesting. My and NY3, two nearly insoluble salts, have the same KSP value. Funky. Same KSP value. Which statement would be true with regard to My and NY3? They are more soluble in water than in water. More soluble in this much, this thing, than in water. Addition of salt Ky to solution of My will have no effect on the solubilities. Molar solubility of My and NY3 in water are identical. The molar solubility of My in water is less than that of NY3. You know what? इस सवाल को मैं बिना देखे solve कर सकता हूँ. Medico looks like has seen the has located the weak point of this question. Okay, Shalini, Gopinath have all located the weak point of this question. Or have you just solved this question before in life? Which one is it? क्या आपने figure out कर लिया इसको कैसे करते हैं जल्दी से? Or have you already solved this question? Done before or doing it now? What do you think? All right, Devanshi, Pampa, Teethraj, Medico, AI, Devanshi again, Piyush, सब लोग बोल रहे हैं D. The quick way of doing this is, yes, somebody said something, My is less than NY3. Okay, now that's great, that's great. इन दोनों के बीच में more soluble in this? No. Less soluble. Less soluble क्यों? क्योंकि common ion effect. तो इसलिए ये वाला है गलत. ये वाला भी गलत होगा. अगर पहला गलत दूसरा भी गलत होगा. एडिशन करने से नो इफेक्ट तो नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट तो है, राइट? कॉमन आयन इफेक्ट है, सो दिस इज रॉन्ग. मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते भाई. हाउ विल इट बी आइडेंटिकल? एज AI said, My is less than NY3. Yeah, My solubility is lower than NY3. Absolutely. तो 4 must be the answer. खैर अगर आप डिटेल में करना चाहते हो, you can actually even solve it. If you want to do this, S1 square 27 S2 power 4. तो इससे you clearly get that S2 is greater than S1. Same thing that AI said, right? If I take this to be S2, this to be S1. Yeah, same thing.
and adding a common ion, it reduces S1 and S2. By reduces, mean it's smaller. Let's not say reduces, because reduces seem like reduction का बहुत है. उसका number numerical value छोटी हो जाती है. ठीक है? Good job everybody. That was very quick. Lovely, lovely. Now we get to something interesting. अब हम करते हैं थोड़ी interesting चीजें. याद था, देखो, मालूम था ना, देखो देखो, याद था. मेडिको, कोई डाउट है, समझ में आया? पिछले सवाल बता दो. अगर कुछ लोगों को याद है तो ठीक है, अच्छी बात है. बट डू यू हैव एनी डाउट्स इन व्हाट आई जस्ट डिड ओवर हियर? आई वेंट अ लिटिल क्विक बिकॉज समबडी, आई एम गेसिंग पीवाईक्यू है तो तुम लोग देख के तुमको याद ही रहते हैं. बट एनी डाउट्स ऑन दिस वन गाइस? अगर याद नहीं था आई थिंक अगली बार से आई एम गोना स्टार्ट डूइंग जेई पीवाईक्यूज फॉर यू गाइस, क्योंकि वो आपने नहीं किए होंगे. नीट में याद मत रखना, नेगेटिव हो जाएगा. हाँ ये वो भी सही बात है, रिस्की है याद रखना, बिकॉज सेम सॉल्व तो फिर से नहीं आएगा. सही बोला. A solution contains 100 ml of 0.01 molar CaCCOH and 200 ml 0.02 molar CaCCONA. To this solution, 700 ml of water is added. pH before and after the dilution are pK की वैल्यू दी हुई है. चलो उसको ट्राई करते हैं. हर्ष भाई मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया आपको. अगर आप इसमें वाई आयंस डाल रहे हो, ओके, we'll do that y ions वाला बाद में. Harsh, you see this S1 square and 27 S2 power 4, is this part okay? S2 into 3S2 whole cube. Why? Because यहाँ पे 3 है, and this is S1 into S1. This is straightforward, right? So this is S2 power 4 into 81 into 27 is going to be equal to 6 into 10 power minus 13, and इधर S1 square is going to be equal to 6 into 10 power minus 13. So जाहिर है कि ये वैल्यू this S2 is going to be much greater than S1. मतलब सॉल्विटी ज्यादा है, राइट? इसीलिए ये वाली लास्ट पॉइंट गलत है. सॉरी, would be true, right? हाँ, My in water is greater than that of My3. एक मिनट. Which statement would be true with regard to My? The molar solubility My in water is less than that of, हाँ, yeah, My, which is S1, is less than S2. We've just done that. Harsh, I hope this is okay. Yeah, sure. I'm going to the question again, but Harsh, since पूछ रहा था, Harsh, is this okay? अगर ये नहीं समझ में आया, please go back and maybe rewatch this part. Just going to the next question for these guys. I'll give you these notes anyway. You can go through them. This question, here's the question. pK दिया हुआ है 0.01 molar CaCCOH, 200 ml of CaCCONA. Yeah. Teethraj and Piyush, okay. Teethraj is saying D, Piyush is saying A. मतलब आप लोग बी और सी को एलिमिनेट कर रहे हो. Why have you eliminated B and C? Why have you eliminated B and C? पानी डालने से कुछ होगा क्या? 700 ml पानी, 700 ml पानी मतलब 7 गुना डाइल्यूट किया मैंने एसिड को, 7 गुना डाइल्यूट किया. देखो यार, अगर आप 10 गुना डाइल्यूट करोगे तब पीएच कम होगा या ज्यादा होगा बाय 1. इसलिए ऑप्शंस बी और सी आर जिब्रिश. These are gibberish options. Also बफर में डाइल्यूशन से कुछ नहीं होता है, राइट? सो ईदर ए और डी इज द आंसर. ठीक है, दैट इज द स्कैमी वे ऑफ प्रोसीडिंग इन दिस वन. एआई, दे हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बिफोर ब्रो, बट ये वाला कर सकते हो जल्दी. ये दिस वन कैन बी डन क्विकली. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बफर. वीक एसिड HA and salt of conjugate base NaA. NaA मतलब A is just acidic ions. ठीक है, pH क्या होगा? pKa plus log of salt by acid. Substitute there. 4.74 plus log of 4. Why is it log of 4? I'm just doing this 200 into 0.2 divided by 100 into 0.1. 0.01. Sorry, 0.02, 0.01. That's it. So this is equal to 4. तो मैंने यहीं पे log 4 डाल दिया. और log 2 कितना होता है? 0.3. That's log 2, right? All this stuff I hope you know. Hence it must be 5.34, 5.34. Another way to do it, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब भी कर सकते हो बहुत आसानी से. देखो, I have written this down for you. See, doing it from first principles. Pay attention here, please. Confused? मेडिको देख लो.
राम राम, ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा. सो होल्ड ऑन, हे, कौन कौन बोल रहा था? एआई, ओके, यू गॉट टू डी, ग्रेट. एम्बेडिको, चेक दिस आउट, राइट. सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कॉन्सेंट्रेशंस, ओके. आई एम फोकसिंग ऑन मोल्स, नॉट रियली कॉन्सेंट्रेशन बट मोल्स, राइट. वॉल्यूम ठीक है दोनों का, जो है 300 ml, 300 प्लस 700 जो भी होगा, व्हाटएवर, विल सी, विल फिगर दैट आउट लेटर. अभी मोल्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है. तो इतने हैं, H प्लस कितना होगा वो निकालने के लिए आई यूज द के का एक्सप्रेशन, ओके. सेम आइडिया आई यूज हियर. नाउ हियर मुझे सेम नंबर आता है, ओके. सो यू सी, यू डोंट हैव टू मग दोस इक्वेशंस, डोंट मग equations in ionic, because first principle से करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है. इट्स द सेम यार. एंड मेरे हिसाब से दिस इज इजियर, बिकॉज गलती से अगर तुमने log ऑफ सॉल्ट बाय बेस, आई मीन सॉल्ट ऑफ एसिड बजाय एसिड बाय सॉल्ट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना. मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. योर कॉल. नीट लवर, कूल. मेडिको, दिस इज ओके. या देमियो, एग्जैक्टली सेम होगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो यू कैन डू दिस वे एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, Kb वैल्यू दी हुई है, is mixed with 0.08 mole of HCl and diluted to 1 liter. What will be the H plus ion concentration in the solution? इसमें कुछ बदलेगा? ट्राई करो. यहाँ पे बेस है और फिर मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ एसिड के साथ. क्या होगा यहाँ पे? What happens here? हाँ, कुछ तो होता है. क्या होता है? ट्राई करो. It's similar to the last question, so you can do it in two ways. या तो आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, or you can do from first principles. But फॉर्मूला लगाते वक्त be careful. Be careful. That's all I'm going to say. How many questions are left? 7 बजे तक खत्म हो जाएगा तीर्थराज. We'll wrap up by 7. We got a couple of more questions. ये वाला और एक और. This one and just one more, I think. You guys are very quick with questions. Whenever I give you PYQ, you are very quick with questions. Maybe there's a reason for that. But seriously, if you have any doubts, please ask me. It's okay अगर आपने पहले किया हुआ है, जो भी है. If you have any doubts, please ask. ट्राई करिए. हाँ, how many questions left? Still that? Okay, मतलब अभी तक इसको ये नहीं हो रहा क्या? मुश्किल लग रहा है क्या ये वाला? You want me to give you a hint? Not sure. B. Okay. Why not sure? क्या है जो इसमें मुश्किल लग रहा है आपको, बताइए. See, this is how I'll go about doing this, right? I'm going to say that B plus H plus gives you BH plus. And B could be anything like NH3. In this case, NH3 में से एक H चला गया. So now instead of this, it becomes NH2 and CH3. So it's very similar to, NH3 in terms of how it behaves like a base. ठीक है? Except कि H plus हो गया base. अभी जब when this reaction happens, okay, Piyush also says B, cool. When this reaction happens, initially मेरे पास है 0.1 है 0.08. Finally कितना है? I get this, and some H plus. I don't know कितना H plus है. Yeah, because why will H plus still be there? Because देखो, ये दोनों तो हैं, but look at what happens here, right? Whoa, BH plus specifically, it goes and reacts with some more water. ये जो बचे हैं भाई साहब है, and it forms this and this. So this process is hydrolysis. No? Yes? Maybe? ABC में कंफ्यूज हो गया था. अविका, नो प्रॉब्लम. अविका, यू कैन चेक आउट द थियरी सेशंस. इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में ही पड़े हुए थियरी सेशन, आप देख सकते हो उसको. बट आई अंडरस्टैंड इफ दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट. बिना थियरी के ये वाला थोड़ा मुश्किल है. अविका, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी, स्पेशली इस सवाल में, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस वन एंड द नेक्स्ट वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. If you have any doubts, ask me. I really don't mind explaining the theory here.
Yeah, this is something I can do for you. Let me know. क्या पार्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है इसमें, प्लीज बताओ. What do the rest of you guys think? बताइए दोस्तों, सब ठीक? Avika, any doubts on? Okay, so what do you not understand? I understand you have a doubt, like what's happening here, क्या हो रहा है? But are you okay with whatever I've done so far? बाकी लोग, yeah, this is same as saying POH. Arey, I realize I'm not writing here. Let me go back to this guy here. This is same as saying POH is equal to PKB plus log of base log of salt by base. ये हो गया salt, ये हो गया base. सेम ही तो है, राइट? के भी ऊपर दिया तो है 5 into 10 power minus 4, शालिनी. Yeah. So what I've got OH minus is from this expression, right? But if you use that POH वाला equation, then you're like, भाई उसमें तो life मुश्किल हो जाएगी. उल्टा, it's easier to do it this way. Much easier to do it this way, right? OH minus is 5 into 10 power minus 4 by 4. 10 power minus 4 into 10 power minus 11 आ रहा है. हाँ, okay. Yeah, सही है ना? 10 power minus 11 ही तो है. देखो, this is OH minus, हमको निकालना है H plus. Okay, if that was not obvious to you, my bad. 10 power minus 14 by OH minus will be equal to pH, right? So 10 power minus 14 divided by, I thought ये obvious है, ऐसे मैंने किया नहीं, but ठीक है, कर लेते हैं, into 4. So 4 by 5 is 8 and into 10 power minus 11. यही तो मिल रहा है. You get the same thing, right? I didn't get Piyush, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं. आप एक 5 भूल गए Piyush. You forgot a 5 right there. It's 4 by 5. Yeah? Medico, your comments are showing. It's all right. Avika, what is it that is a little bit weird here? Can you please tell me? See, you can also look at it like this, right? This is one way to look at it. You can also look at it as simply B. Let me go through NCRT, ताकि I don't confuse you. Yeah, hold on. Base, buffer. अच्छा, ऐसा NCRT में है ही नहीं. NCRT में एक लाइन में दिया हुआ है. Yeah, brilliant. ठीक है, you have to go through my theory session there. It'll be better if you go through my theory sessions for this buffer wala theory. It'll be good. Yeah, you can use hydrolysis, you can use just the idea of buffer, anything works. The thing is ki in ionic, it's all the same, right? Okay, I'm just going to go through this theory a little bit here. Please just bear with me for a second. Okay, मैंने वो short में लिखा था वहाँ पे, but फिर से अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ. Say I have NH4OH and I'm adding HCl. Okay, drop by drop. NH4OH है in the conical flask, and I'm adding HCl. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि शुरुआत में pH होगा जो भी होता है इसका, whatever it may be, like 9 or 10 or 11, जितना भी होता है, NH4OH का जो भी होता है. Then as I add HCl, क्या होता है? I get NH4Cl being formed and a lot of NH4OH, right? This section of this is a buffer because it has NH4OH and NH4Cl. Then after a point, ये है एंड पॉइंट इसका. मतलब क्या हुआ यहां पे only NH4Cl is there. Okay, so this is equimolar. Say 1:1, या फिर यहां पे बोल सकते हो एंड पॉइंट हो रहा है of the titration. Now the interesting thing is pH is not 7. 7 is somewhere here. So this is greater than 7. Let me use a different color to write that here. Why is pH greater than 7? Because I've got a salt. कहाँ है salt? कहाँ है salt? कहाँ है salt? Only NH4Cl of a strong. एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया क्या? It should be less than 7, not greater than 7. Strong acid and weak base. So that's a good way to check, I guess. That's a very good way to check. This pH is not 7, that is right. But this pH will be
लेस देन 7, क्योंकि इसमें सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HCl एंड NH4OH, वीक बेस को रिएक्ट करके बनता है NH4Cl. So this pH must be acidic. This is something you have studied in 10th grade, right? Okay, it's a basic buffer. You're right, you're right. The buffer is basic artificial intelligence, but एक बार अगर pH, एक बार ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, right? The end point of the titration, that is going to be less than 7, NH4Cl itself, right? That you figure out using hydrolysis of this thing. क्या होता है? NH4 plus, yeah, reacts with water, gives you H plus and NH4OH. ठीक है, this is the reaction that happens. This revises the whole of, देखो एक titration में you have everything. शुरुआत में you will use the regular Kb वाला formula. Kb is equal to C alpha square by 1 minus alpha. ठीक है. Then in this part you will use the buffer का formula. What is the buffer का formula? POH equal to PKB plus log of salt by base. And third wala, you will use this endpoint wala equation. So you see, in one graph, you have the whole of ये ionic equilibrium खत्म. अगर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, I understand अगर ज्यादा हो गया तो, but this is it. This is the main theory you need to know to solve everything. ठीक है? This was Avika's benefit, but Avika लगता है चली गई है. Last question for the day. 5 ml of 0.1 molar NaOH is added to 50 ml of acetic acid solution. Calculate the pH of the resulting acetic acid solution. You can do this with a direct formula or you can do this from first principle. जैसा आप चाहो. Either way. Yes, AI. Cool. Absolutely right. This one, इसको कैसे करोगे आप? How will you do this one? Can you try this out? Try करें इसको. पिछला वाला थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? It's not in your syllabus, but I feel that it really helps you see the whole chapter in perspective. क्योंकि otherwise आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत मुश्किल मानते हो क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है. बट देखो सारी थ्योरी हम लोग 5 मिनट में कर सकते हैं. ऑब्वियसली यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम बिफोर दैट, बट वंस यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स लाइफ बिकम्स वेरी इजी. आई हैव डन दिस इन डिटेल इन द थ्योरी सेशंस ओवर हियर, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. ट्राई दिस आउट. ये वाला सवाल कैसे करोगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? NaOH है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए. न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बचता है, which is in excess, that will tell you the answer. I've got a hack here though. ये hack ये है इसमें कि I've got a lot more acid as compared to the base. So in this case, look at it. मैं अभी आपको pH की कहानी बता रहा था, exactly वही हो रहा है यहाँ पे. So I have CH3COH in the funnel and I'm adding NaOH. Yeah. Drop by drop. So if I do that, आप लोग आंसर बताओ तब तो मैं कहानी बताता हूँ. Okay, if I do that, endpoint titration will be here. This is greater than 7. Now what do I have? I have acid in excess. मतलब somewhere यहाँ पे है. This solution is somewhere over here because all I have is I have HA and A minus. मतलब ये हो गया buffer, right? This is a buffer which is acidic. मतलब आप इस आंसर को बेसिक वाले को कैंसिल आउट कर सकते हैं. So right now in this process I have exhausted all of NaOH. ठीक है, बचा क्या? A lot of HA and A minus that you get from neutralization. Cool. You can eliminate B and D. B भी eliminate कर सकते हो. B is a little close, but yes, you can eliminate B and D. Lovely. Excellent work. Excellent work, Rakshita. Thank you for joining and giving that amazing insight. Thank you, Rakshita. AI says A, Piyush A, Pampa A, Devanshi A, Rakshita A, Harsh A. Okay, all right, awesome. Hey, is this part okay? ये जो आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं, is this too much? If this is too much, let me know. This is volume of acid. Sorry, volume of NaOH added. Okay.
Is this graph useful at all, और आपके लिए is this too much? Just let me know in the comments. Did this thing help at all? Yeah. ये शुरुआत वाला part you get by Ka equal to C alpha square by 1 minus alpha. This is the equation that holds good over here. यहाँ पे क्या है? pH equal to pKa plus log of salt by acid. Last वाला, ये वाला point is where hydrolysis happens. Hydrolysis of NaA or basically A minus ions. यही तीनों चीजें. Again, the whole of ionic equilibrium. Okay. So how do I do this? I put this down here. Initially इतने थे. Finally कितना होगा? 4.5 millimole or 0.5 millimole. I like doing things in millimole because it keeps things light. Yeah. I can use the equation or I could just do it from first principles. First principle करने का फायदा ये है कि I can never go wrong. Right? I will write Ka again over here as it is. I am not worried about alpha C. कुछ नहीं. सीधे concentration दिए हैं. So I am doing this now. Now H plus निकालने में I get pH equal to pK minus log 9. Okay. So pK कितना है? Something like ये 4.74 है, you know this, but ठीक है. 5 minus log 1.8, right? So 5 minus 0.9 minus log 1.8. तो कितना हो गया ये? This is funny. Is it C or is it A? क्या हो रहा है इधर? What do you think? A or C, guys? देखो log 9 तो 0.9 हो गया ना. Okay, let's go one step back. What is log 9? Is 3 log, sorry, 2 log 3. This is not be 0.9, be 0.6. Let me fix that. Slide number 71. Slide number 71, calling once, going twice. Sold to the highest bidder. 71. Okay, this should be 0.6, not 0.9. Do you see why I wrote this as 0.6, guys? वो log का idea is clear है, or is that like again whoosh? See, 3 square is 9. So log of 3 square is equal to log 9, which is 2 log 3, and log 3 कितना होता है? 0.5 होता है. अरे यार सही था, ये 0.9 सही है. So it's actually going to be 1. सही था, गलत नहीं था. That was right. Looks like I use a calculator to do this. So actually it will be minus 1. ठीक है? Do you guys see where I'm going with this, guys? दोस्तों, this 2 log 3 is going to be 2 into 0.5. It's actually 0.49, right? Log 9, but yeah, this is approximately equal to 1. Okay. क्यों? क्योंकि E is almost equal to 3, right? 2.78. तो वही उसी point of view से ले लो. All right. So what do we do here, guys? What do we do? A होगा? Are you sure A होगा? Okay. Let me take a calculator and do this out there. 5 minus log 9. Is it log 9? Oh yeah, it is log 9. ये सब जरूरत ही नहीं है. Not E की बात ही नहीं हो रही है. Yeah, log 9 सही है यार. Log 9 minus log of 1.8. 3.79, guys. C is the answer. सही तो था. A कैसे होगा? तीसरा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है यार, छोटा कैलकुलेशन है. Log 9, as I wrote, which was right, is simply log of 3 square, which is 2 log 3. Okay, log 3 is approximately 0.5, so 2 log 3 is going to be equal to 1. Okay, 5 minus 1 is 4, मतलब 4 से थोड़ा कम, so answer is C. ठीक है, it's not a crazy calculation. लग रहा है crazy है, but crazy नहीं है. ठीक है, okay, cool. Yeah, I mean you get exactly 3.79, but that's not important. If you take a calculator, which I shamelessly did, you get exactly 3.79. But even without a calculator, I know कि it's little less than 4. 4 minus log of 1.8. So it must be C and not A. ठीक है? So now tell me, सब लोग A क्यों बोल रहे थे? Answer is C. We are out of time. I think you have another session. We'll call it a day. Now, how confident are you about ionic equilibrium? That's the goal. ठीक है? हुआ नहीं हुआ, no problem. I told you, last के 3 questions are the ones that are going to make sure that you know ionic equilibrium inside out. Log की वैल्यू में गलती हुई, ठीक है. इतना नहीं करना पड़ेगा नीट में, बट माय जॉब इज टू गेट यू कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर नीट. तो इसलिए नीट से थोड़ा ऊपर में लेवल कर रहा हूँ. पीवाईक्यूज आपने बहुत जल्दी कर लिए, या तो आपको याद थे या तो आपने एक्चुअली किए. इधर गुड जॉब. बट जो लास्ट के 3-4 सवाल थे वो पीवाईक्यूज नहीं थे.
उसमें हमको थोड़ा सा hurt, you know, it was okay. It was good. You guys did well. You guys did really well. We just solved a lot of questions. In about 40 minutes, we solved around 14 questions. That's a lot of questions, guys. So hats off to you. Hats off to you. ठीक है, चलो. Thank you so much for your time. I'll see you again on Thursday. Thursday को क्या कर रहे हैं हम लोग? Thursday को हम लोग कर रहे हैं. What are we doing, guys? Ooh, coordination. The big guns are out. Yeah, syllabus almost हो रहा है complete. Coordination, then redox and P block, and we are done by the 9th of Jan. उसके बाद क्या करने का मन है? Shall we maybe just do everything together and just pick whatever question and solve? Yeah, that's the plan आगे के लिए. I hope you guys enjoyed this. Please, सारे सवाल सॉल्व करिए, सब्जेक्टिव सवाल एनसीईआरटी के. दैट इज व्हाट विल गेट यू थ्रू आयोनिक इक्लूड. अवेका एंड एवरीबॉडी एल्स हु हैज नॉट डन द थ्योरी फॉर व्हाटएवर रीजन अभी तक. ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं थर्सडे को. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू ऑल. बाय, टाटा, थैंक यू, बाय. Oops. Yep. Thank you. Bye bye. Bye bye bye. Yeah, coordination. Coordination next. Absolutely. All right. See you. Tata. Bye.